हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम देख रहे हैं, कौन सा वीडियो आपने भेजा है, देखें। पीएम मोदीज क्लोजिंग रिमार्क्स एट द G20 समिट न्यू दिल्ली। हाय, खत्म भी हो गया, पता ही नहीं चला यार। अभी तो शुरुआत था, अभी तो मजे आने शुरू कल होते जो हैं। है जब पूरा एक्चुअली खत्म होगा तब हम बोलेंगे गुड जॉब डन, सब हो गया, सब बढ़िया हो गया। कल खत्म होना है। मतलब मैं एक और दिन दे देता हूँ एडिशनल, जिससे सब जिसको जाना हो चले जाएं। मिस्टर बाइडेन भी ज़्यादा समय के लिए आए थे, मुझे नहीं पता कौन कौन रुक रहा है, मगर अल्टीमेटली कल तक तो आए होप कि सब लोग जो है चले जाएंगे। चलो देखते हैं। तो चलो मोदी जी का क्लोजिंग रिमार्क सुनते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। the president लूला डी सिल्वा को and हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं De Silva. और मैं उनको And now I प्रेसिडेंसी का ओए हो सॉरी जानी केवल मत। सौंपता हूं। मैं मोदी जी मत दो, मत दो। वो कह रहा मैंने ठोकना है। वो भी चाहिए मुझे। उनको वो भी चाहिए तो चलो। मैं राष्ट्रपति लूला को इस अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित मोदी जी करता के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम हुआ था जब मिला था। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। Bem, primeiro तो ट्रांसलेट gostaria de dizer ब्राज़ील है ना, às पोर्चुगीज। autoridades aqui presentes, suas altezas, aos presidentes, aos अरे primeiros बोलो तो ministros, सो वो de ट्रांसलेटर que कहाँ गया? a natureza ela continua dando सब लोगों को बड़ा ध्यान देर बाद याद आएगी, कान में लगाना है, अब लगा रहे हैं। nós precisamos Brasília, cuidar né? dela com muito mais तो carinho. पोर्चुगीज बोल रहे हैं। पर अपने को Essa तो समझ ही नहीं semana, आनी। há três Goodness. This week, 3 days ago in Brazil, a cyclone in the state of Rio Grande do Sul. We had never had a cyclone there, but the cyclone killed 46 people, and we have almost 50 people missing. And this draws our attention because phenomena such as these have been taking place in all different locations on our planet. Well, Eu quero जब नहीं होते थे वहाँ आ रहे हैं। first, I would like to congratulate Prime Minister Narendra Modi for the efficient leading of the Indian presidency of the G20 and for the excellent work done in preparing this summit, and also with all the care that he and they gave us in these days that we spent with you. I thank India for its efforts to give voice, for giving voice to the topics of interest मोदी जी कैसे सुन रहे to हैं? emerging लगाया economies. So हुआ है क्या? I would also don't know. like to लगा हुआ है कुछ give my वो काला salute सा to लग रहा our है। friend, the representative of the African Union, who is a member of G20. consolidou como uma das principais instâncias de governança global na esteira de uma crise que abalou a economia mundial. Nossa atuação conjunta nos permitiu, उनको तो इतना बोलने का मौका मिला। मोदी जी ने तो कुछ भी नहीं बोला था जब वहाँ पे इंडोनेशिया में थे। mas वो foi prepare मोदी जी ने कराया तो वो स्टैंड भी नहीं मांगा था जैसे इन्होंने मांगा है। And this was ये important, तो not कहते मेरे को स्टैंड sufficient भी अभी to चाहिए। correct 5 मिनट रुक नहीं the सकता। structural defects of neoliberalism. हद ही है। The global financial architecture has changed little, and the foundations of a new economic governance have not been laid. novas urgências New emergencies emerged. desafios se acumularam. Challenges have accumulated and ये worsened. तो मजेदार नहीं। Vivemos num mundo We are Modi ji living in a मजेदार थे। world where wealth is more पूरा बना के लाए concentrated, हैं। de milhões de in which millions of human beings still go hungry. o
where sustainable development is और always लोगों को भी ऐसे ही threatened, होता है, जब हम लोग बोलते हैं उनको भाषा नहीं आती तो ऐसे ही in ट्रांसलेटर ही which बोलते हैं। governance institutions still reflect the reality of the middle of the last century. We will only be able to face all these problems if we address the issue of inequality. Inequality of income, ये access तो to लग रहा है इन्हीं का कोई healthcare, ट्रांसलेटर है। education, हमारा food, ट्रांसलेटर के एक्सेंट तो नहीं लग रहा इंडिया का। gender, and race, इन्हीं का। and also of representation is at the origin of all these anomalies. If we want to make a difference, we have to place reducing inequalities at the core of the international agenda. तो लंबा बोल रहे हैं। Therefore, the Brazilian presidency of the बहुत ही जगह G20 बोल रहे उनके दो तीन has three पन्ने हैं। priorities. वो The अपने टाइम first में one बोले is हमारा social टाइम है। inclusion and fight against hunger, energy transition, जो process and होता होगा वही sustainable follow development. मोदी जी ने नहीं in बोला its था, three हमने तो नहीं सुना। पता aspects, मोदी जी ने बोला था the क्या कुछ उस vector, टाइम social, इंडोनेशिया the में? economic and environmental vector. हमें तो कोई वीडियो And नहीं भेजी आप लोगों thirdly, ने। the reform of global governance institutions. All these priorities are part of the Brazilian presidency motto, which says, building a fair world and a sustainable planet. Two task forces will be created. The Global Alliance Against Hunger and Poverty and the Global Mobilization Against सारे Climate लाए हैं तो Change. भैया चार ये तो पांच पूरा ही ले लिया अब We redouble our मोदी जी efforts का to टाइम। achieve the goal of ending world पांच पन्ने। hunger by 2030. Otherwise, we will be facing the biggest multilateral failure in I don't recent think इतना years. बोलने का होता है। Acting to fight climate change requires political will and determination from the rulers, as well as resources and technology transfer. We want greater participation of the emerging countries in the decision-making process of the World Bank and the International Monetary Fund. The unbearable foreign debt of the poorest countries needs to be addressed. The WTO must be revitalized and its dispute settlement system must start working again. To regain नहीं its political strength, the UN इनको पता नहीं Security तो छोटा सा Council स्पीच needs देनी to है। count on the 10 presence pages of new developing countries among 10 its page agenda permanent पढ़ and के गए हैं। non-permanent members. The international community अपने looks टाइम at में us बोलना with था। hope because we bring together मोदी जी का सुनना है। economies from emerging countries and developed countries in the G20. We represent 80% of the global GDP, 75% of exports, and around 60% of the world's population. To ensure that the G20 acts in an inclusive and coherent manner, Brazil intends to organize work around three general guidelines. First, किसने स्नैक्स खाए जो भी? पीछे बैठे हैं हाँ उनके डिफरेंट the हैं। political and वो financial वाले जो होते हैं paths सर्कल वाले work in coordination वो and सिल्वर in टाइप an हैं, जो मेन लोगों integrated के way. गोल्ड ये टाइप हैं। गोल्डन से There's no point in agreeing Leaders on the के best different public Leaders के different policy if we do not allocate the necessary resources for its implementation. Second, we have to listen to civil तो पन्ने नहीं society. खत्म हो रहे। There are no governments without civil society. The Brazilian पीछे presidency एक भाई will साहब सो रहे ensure थे उठ गए। that वो तो कुछ खा वो engagement साइड वाले groups क्या कर रहे have the हैं? opportunity खा to रहे हैं। report their स्नैक्स रखे हुए conclusions हैं। and recommendations. देखो पढ़ स्नैक्स रहे हैं। रखे हैं, कुकीज रखी हुई हैं। Thirdly, वो मुझे लग we रहा है cannot अखरोट लग रहे हैं। let geopolitical मखाने लग रहे हैं एक issues तो मुझे। hijack the discussion agenda of मैं the तो ही खा रही होती various बस G20 सुनते हुए। बॉटल में क्या था levels. पता नहीं चला। We are पानी- not पानी interested नहीं, in एक बार a वो स्प्रे वाली divided बॉटल है। हैंड G20. सैनिटाइजर Only होगा। through joint action may we face the challenges of our days. We need peace and cooperation instead of conflict. The path that will take us from New Delhi to Rio de Janeiro will require a उनका lot होगी of देना ना। dedication and commitment उनकी है from ना। everyone. The technical groups and the preparatory ministerial meetings
will be hosted in several cities in all our 5 regions of our country. अच्छा इनके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स For में that कर रहे हैं reason, we will welcome the members of the G20 with open arms. And we need effectively to the support of all the people here, including the track record of this successful summit meeting that was hosted by our dear country that is India. I will be very much honored to welcome you all to the Rio de Janeiro summit in November of 2024. And before I hand the hammer here, I would like to thank very much to Prime Minister Modi and to thank to the Indian इनको people मारना था इसलिए लिया था for the competence that they had for organizing this event. And I would like to say, Prime Minister Modi, that I personally am very much touched emotionally when I want to pay a homage to our dear Gandhi, that we paid a homage Yes, today. I was emotional. Everybody knows that in my political life, Mahatma Gandhi has great meaning because the struggle with non-violence was a role model that I followed for many decades when I was in the labor movement, and that's why I'm very much touched and emotional and I'd like to thank you for the opportunity to pay this homage that we did today. And I'd like to say to all of you that Brazil will take the chair of the G20, and we will make a tremendous endeavor to manage to at least try to do something as the same that our brothers and sisters from India did. Thank you very much. छोटे बच्चों की तरह सबको एक्साइटमेंट होता है वो मेरे पास आई है Your Highnesses, Excellencies, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी नवंबर तक। जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहाँ रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। वाह उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा क्या हो गया कर सकते हैं। देखो इन सब की लोगों डिटेल्स को रियलाइज नहीं हो रहा कि क्या हमारी टीम पसीना आ आप रहा है सभी क्या के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता बाद में हूं उनको रियलाइज होगा तो कि देखेंगे आप ये क्या हो सब गया इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, बड़ी देर तक क्लीन इसी करते के रहे साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह हमेशा इंडियंस को साथ में लेके बोलते हैं। वाह यार मजा ही आ गया। और देखा था कि सबको वो हथौड़ी या हैमर जो भी बोलते हैं एक्साइटमेंट होती है कि मुझे ये जल्दी से मिले, और वो तो होता है कि भैया साथ में मुझे उसके जो मारने वाला नीचे का ट्रे भी मिले, क्योंकि उनको मार के दिखाना था इस बार की ढंग। यार मोदी जी के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो हमने जब वीडियो देखी थी उसमें सिर्फ उनको मिला था एंड दैट वाज द एंड, उसके बाद खत्म हो गया बस। यहाँ पे तो इनको बोलने का भी मौका मिला, इनको हथौड़ी से ठक ठक भी करने का मौका तभी मिला। खुश हो रहे हैं लोग कि चलो यहाँ पे सब ऑर्गेनाइज्ड है, different किसी को है। दिया, उसको बोलने का मौका दिया।
कि अगली बार तुम्हारे यहाँ पे होना है तो तुम बोल लो अभी। अब देखते हैं, वो कह रहे मैं कोशिश करूंगा इस तरह से करने की अरेंजमेंट, इतना तो नहीं पर इसके लेवल तक की कोशिश करूंगा। भैया अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। अब ये देख लो, इतना हाई लेवल हमने दिखाया है करके, तो उस हाई लेवल को मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, अब ये देखने वाली बात है। पर दिस वाज अमेजिंग यार, मजा आ गया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।